Check out our latest upload on Ignited Minds Tutorials, NET Revision Biology video series covering the topic of biological classification. In this video we delve deep into the various principles and methods used to classify living organisms based on their evolutionary relationships and similarities. From understanding the history and significance of biological classification to exploring the various classification systems and their significance in the field of biology, this video provides a comprehensive overview of the topic. Whether you're a student preparing for the NET exam or simply someone interested in deepening your knowledge of biology, this video series is designed to ignite your mind and enhance your understanding of biological classification. Our experienced tutors break down complex concepts into easy-to-understand explanations, supplemented with visual aids and examples to ensure maximum comprehension. So, don't miss out on this valuable resource for NET revision. Subscribe to our channel and stay updated with our latest video uploads. Ignited Minds Tutorials is committed to providing high-quality educational content to help students excel in their academic pursuits. Join us on this learning journey and let's ignite our minds together. Okay students, so in this session we will be discussing the second chapter for the NEET revision, that is biological classification. So we already completed what living world. So we have an idea that what is taxonomic hierarchy, and in the first taxonomic hierarchy, taxon itself, we studied what is kingdom. Okay, so in this chapter we will be dealing with different kingdoms, 5 kingdoms in detail. Okay, let's start. So what is biological classification? Classification we already mentioned in systematics and taxonomy. We are grouping the organism based on the similarities and the dissimilarities into different taxons. Okay. So what is the basis? Similarities and the dissimilarities. What are the aims or objectives of the classification? Identifying and describing which description? Morphological description of the organism. Then arrangement of the organisms into different taxa, starting from kingdom ending in species. Different taxa में एक organism को हम arrange करना है. Then establishing a phylogenetic system. अगर phylogeny भी आ गया तो it is not taxonomy. It is coming to systematics. So you are now connecting each other. The first chapter and this chapter is a continuity. Yes. So who is the father of biology? Aristotle. Okay, you have to learn that. Aristotle is the father of biology. So he proposed the first classification. पहली organism को जो grouping किया है ना, categorize किया. Even in we can see in this class itself we can categorize students into 2, boys, girls. इसी तरह society को भी हमें different age group में classify कर सकते हैं. Okay, so we can say फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल, उनका जो क्लासिफिकेशन था वो बहुत सिंपल था. उन्होंने क्या किया, जैसे मैंने आज की क्लास में भी बोला, they are classified, he classified plants and animals into based on their simple characters. For example, animals को उन्होंने जिसको रेड ब्लड होता है और जिसको नॉन रेड ब्लड होता है उसके अनुसार क्लासिफाई. अगर प्लांट है तो उसको कैसे क्लासिफाई किया, देखो सॉफ्ट स्टेम, उसको हेर्ब बोलते हैं. हेर्ब सॉफ्ट सिस्टम में तो उसको हेर्ब बोलते हैं. तुलसी हर्ब, हेर्बल. देन वन वुडी स्टेम, थोड़ा सा वुडी स्टेम में तो उसको बोलता है, एक सिंगल वुडी स्टेम में तो दैट इज ट्री, है ना. बाहर जो पर्ड दिख रहा है उसका सिंगल वुडन ट्रंक रहते हैं ना. देन सेवरल वुडी स्टेम्स है तो मतलब एक बहुत बड़ा वुडी नहीं, डिफरेंट ब्रांचेस. वो स्टेम थोड़ा सा सॉफ्ट नहीं, हार्ड है, जैसे हिबिस्कस में होता है. तो वो क्या होता है, दैट इज नॉट हर्ब, दैट इज श्रब. समझा. रोज है ना. तो जिसका सॉफ्ट स्टेम होता है वो है हर्ब, जिसका वन लार्ज ट्रंक होता है दैट इज ट्रीज, जिसको मेनी डिफरेंट ब्रांचेस रहता है वो भी थोड़ा सा वुडी टाइप है तो दैट इज श्रब. तो हर्ब, ट्रीज, श्रब, ऐसे किया प्लांट्स की क्लास.
Coming to animals, इधर देखो enema and anema. Enema means those who have RBC. Anema means those who do not have a RBC. For example, cockroach के तरह आ सकते हैं, कलरलेस है ना उसका ब्लड, so that is anema. And हम एनेमा में आते हैं विथ आरबीसी. देन habitat के अनुसार भी क्लासिफाई करते हैं ना, जो एयर में रहते हैं, एयर में रहते हैं इन द सेंस बर्ड्स. ओके, देन बैट भी उसमें आ सकते हैं, इवन दो डिफरेंट क्लास है. एव का क्लास अलग है, बैट इज मैमल, यू नो दैट. स्टिल, सो यू अंडरस्टूड वन मिस्टेक ऑफ दिस. उन्होंने सिमिलैरिटी को थोड़ा सा नेग्लेक्ट कर रहा है. इधर क्या हुआ कि उन्होंने बैट को भी और बर्ड को भी, एवियन लाइफ है ना दोनों का, तो इसलिए एक ग्रुप में डाला. ओके, तो वैसे थोड़ा सा मिस्टेक किया. यस. देन वाटर डलर्स मींस फिश आते हैं. डॉल्फिन एंड व्हेल वो मैमल है, को भी डाला, so that is a problem. Then land dwellers, terrestrial animals. वैसे habitat के अनुसार terrestrial, aquatic यानी water dweller, aerial means air dweller. ऐसे 3 क्लासिफिकेशन. एडवांटेज क्या था? फर्स्ट अटेम्प्ट है ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग ऐसे बोलते हैं ना. पहले कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं किया, इन्होंने ही शुरुआत किया. ही वाज द पायनियर इन क्लासिफिकेशन, इसलिए फादर बोलते हैं ना, फादर ऑफ बायोलॉजी. तो उन्होंने स्टार्टिंग किया, दैट इज अ मेरिट. एंड डिसएडवांटेज क्या है? एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कंसिडर नहीं किया है, एंड जो डिसिमिलर है उनको भी सिमिलर ग्रुप में डाला है. जैसे मैंने बैट का और बर्ड का बोला, डॉल्फिन, व्हेल और अदर फिशेस का बोला. ओके, so such kinds of demerits are also there. So quickly this was discarded by some new scientists. Then the second classification was two kingdom classification. In two kingdom classification, it was proposed by Carl Linnaeus. Linnaeus से related सब दो है. Binomial nomenclature, दो पार्ट वाला नाम. इधर two kingdom classification. तो ऐसे correlate करके याद रखें. So Carl Linnaeus, he is the father of systematic taxonomy. Okay, वैसे बोला. So two kingdom classification was proposed by him. There are two kingdoms. There were only two kingdoms initially. They are Plantae and. तो इसमें क्या होता है, फंगस को भी उन्होंने प्लांट समझा. बस प्लांट अलग है ना, प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं, फंगस क्या करते हैं, साप्रोफाइट है, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म आते हैं. तो वैसे उन्होंने थोड़ा मिस्टेक्स किया है उधर. ओके, तो एनिमल्स एंड प्लांट्स ऐसे ओनली दो कैटेगरीज में डाला. उसका कुछ और एडवांटेजेस बता रहा है. ही रोट स्पीशीज प्लांटेरम, सिस्टमा नेचुरे, ऐसे दो बुक्स लिखा था, कल मैंने बोला. तो दीज बुक्स वेर containing different organism. बायोडाइवर्सिटी उन्होंने ट्रेस किया, ऑर्गेनिज्म की नेमिंग किया, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर डाला. वैसे बहुत ज्यादा अचीवमेंट्स उन्होंने किया है. बट इधर प्रॉब्लम क्या है? There is a difference between the classification of Aristotle and Linnaeus. The difference, what is that? Aristotle used the habitat and morphology for classification. Aristotle used the habitat and morphology. पिछले वाला कौन सा? Air dweller, water dweller, वो terrestrial. Habitat as well as morphology. Morphology means जिसको shrub, herb, tree, वो morphological classification था. इन्होंने थोड़ा अपडेट किया. He used, Linnaeus used morphological similarities, dissimilarities and fossil record also. Morphological similarity, dissimilarities and the fossil record, ये भी उन्होंने क्या किया है? यूज किया. Now coming to demerits of this two kingdom classification. No distinction between eukaryotes and prokaryotes. Okay, बैक्टीरिया प्रोकैरियोट है, उन्होंने किधर डाला होगा? एनिमेलिया में डाला होगा. बट इट इज नॉट करेक्ट, बिकॉज एनिमेलिया में कौन आना चाहिए? यूकैरियोट. बैक्टीरिया इज अ प्रोकैरियोट, उसको क्यों डालना है? गलती हुआ. Then no distinction between unicellular and multicellular organisms. है ना, यूनिसेलुलर का फाइलम अलग होना है, मल्टीसेलुलर का फाइलम अलग होना है. 5 किंगडम क्लासिफिकेशन तो परफेक्ट है, that we will study. No distinction between photosynthetic algae and non-photosynthetic fungi organs. सबको प्लांट में ही डाला, बोला ना, फंगस को भी प्लांट में डाला, algae को भी प्लांट में डाला.
So that is not fair. प्लांट बोलते हैं मैं खाना खुद बनाता हूँ, ये खाना दूसरे से लेता है, फिर मेरे क्लास में क्यों है आया? तो वैसे झगड़ा होता है. So that is the demerit. Few organisms did not fall into either category. जैसे युग्लिना होता है. युग्लिना क्या है? युग्लिना इस प्रोटोसोवन है, वो प्लांट लाइक प्रोटोसोवन है, लेकिन उसको एनिमल लाइक फीचर्स भी है. ओनली 2 किंगडम्स आर अलाउड, प्लांटे एंड एनिमेलिया. युग्लिना कैसा है? आधा प्लांट की फीचर्स आधा एनिमल की फीचर्स भी है, तो उसको एक्चुअली प्रोटिस्टा में डालना पड़ेगा, लेकिन प्रोटिस्टा तो इन्होंने मेंशन भी नहीं किया. सो दैट इज द प्रॉब्लम. बॉर्डर लाइन ऑर्गेनिजम्स भी रहते थे. यस. सो बिकॉज ऑफ दीज demerits, the another classification system came, that is three kingdom classification. And in three kingdom classification, the new kingdom added was Protista. तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? अरिस्टोटल की क्लासिफिकेशन पढ़ा, उसमें कुछ किंगडम्स नहीं था. किंगडम्स मेंशन करना लिनेयस शुरू किया है. वो 2 किंगडम मेंशन किया, प्लांटे एंड एनिमेलिया. एंड हियर इट इज एर्नेस्ट हैक्कल. हैक्कल्स की टर्न है, उन्होंने एक और फाइलम ऐड किया, प्रोटिस्टा. So Ernest Haeckel proposed the three kingdom classification. He classified kingdom Protista. They are the organism that did not have a tissue. मतलब यूनिसेलुलर, सेल लेवल ही होता है. उसमें प्रोकैरियोट्स आया, प्रोटोजोआ को डाला, स्पॉन्जेस को डाला, algae को डाला, फंगाई को भी, यूनिसेलुलर फंगस को भी डाला. okay. फिर भी ठीक नहीं डाला, ठीक नहीं है, because you know that they all have difference. okay. So he classified organisms into 3 different kingdom. उसमें भी थोड़ा सा limitation. Demerit क्या है? Not accepted because both prokaryotic and eukaryotic organism containing chlorophyll were grouped together. For example, देखो algae. algae कैसा है? chlorophyll containing है, लेकिन fungi कैसा है? chlorophyll नहीं है, तो एक ग्रुप में क्यों डाला? तो वैसे नॉन क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म को क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म की डाला, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को मल्टीसेलुलर ग्रुप में डाला, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को मिक्सअप करके डाला. तो वैसे क्लियर डिस्टिंक्शन नहीं रखा, कौन सा वाला है प्रोकैरियोटिक फाइलम, कौन सा वाला है यूकैरियोटिक, कौन सा वाला है यूनिसेलुलर, कौन सा वाला है मल्टीसेलुलर, ऐसे डिफरेंस नहीं. दैट वाज वन ऑफ द बेसिक लिमिटेशन. देन आफ्टर 3 किंगडम क्लासिफिकेशन देयर कम्स द 4 किंगडम क्लासिफिकेशन. इसमें एक और स्टेप बाय स्टेप जा रहा है ना, 2 से शुरू किया, 3 आया, अभी 4. हेर्बर्ट कॉपलैंड डिड दिस क्लासिफिकेशन ऑफ 4 किंगडम क्लासिफिकेशन. इधर कौन सा फाइलम ऐड हुआ? मोनीरा ऐड हुआ. ओके. सो ही एस्टैब्लिश्ड द किंगडम मोनीरा. इसका डीमेरिट क्या है? algae, fungi, protozoa were all included under kingdom Protista. उन्होंने क्या किया? algae, fungi, protozoa, ये सबको, you know that algae photosynthetic है, fungi saprophytic है. ओके. प्रोटोजोआ को कैसा है? प्लांट लाइक फीचर्स भी है, एनिमल लाइक फीचर्स. तो ये तीनों को अलग अलग ग्रुप में डालना चाहिए था, लेकिन उन्होंने एक ही ग्रुप में डाला. दैट इज द प्रॉब्लम. डिमेरिट. समझा? तो सबका डिमेरिट क्या होता है? प्रॉपर डिस्टिंक्शन नहीं है ऑर्गेनिज्म. ओके. सही से क्लासिफाई नहीं किया. So kingdom Protista is also known as grab bag of organism because it is a diverse kingdom that include primarily unicellular and eukaryotic organisms. Protista की feature क्या है? Unicellular, eukaryotic. Okay. It contain organisms that do not fit into any of the other classification because they have, some of them have animal-like features, some of them have fungal-like features, some of them have plant-like features. Okay. Protista kingdom is very diverse. उसमें क्या है? यूनिसेलुलर होता है, यूकैरियोटिक होता है, एनिमल लाइक, प्लांट लाइक, फंगल लाइक, नंबर्स. तो इनको क्लासिफाई करना बहुत मुश्किल. So these were the challenges and demerits faced by 4 kingdom classification. तो ये सब क्लासिफिकेशन ऐसे वन बाय वन गया एंड बाद में आया हमारा 5 kingdom classification. So we just will discuss this slide. So in 5 kingdom classification, who proposed this 5 kingdom classification? Robert H. Whittaker. Year is very important. 1969. याद करना भी इजी है ना, 19. So Robert H. Whittaker, R. H. Whittaker, he classified
organisms into 5 kingdoms. Which are the 5 kingdoms? Monera, Protista, Fungi, Plantae, Animalia. तो इधर fungi नामक एक kingdom, 5th kingdom fungi, वो इन्होंने introduce. So this classification was based on 5 different features. Okay, what are the criteria of classification? Cell structure, cell biology देखा उन्होंने, यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है. सेल स्ट्रक्चर में क्या दिखता है, यूनि है या मल्टी है. ओके, एंड वो इधर भी डिस्कस कर सकते हैं ना, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन उसमें सेलुलर लेवल है, टिश्यू लेवल है, ऑर्गन लेवल है या ऑर्गन सिस्टम लेवल है, वो डिस्कस किया. ओके, वन मोर थिंग, सेल स्ट्रक्चर में प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है, वो भी मेंशन किया, प्रो या यूकैरियोट. So cell structure, whether they are unicellular or multicellular, whether they are prokaryotic or eukaryotic. फिर body organization means कौन सा level में आता है, cell, tissue, organ system कौन सा में आता है. Then mode of nutrition, nutrition कौन कौन सा है, autotrophic, heterotrophic. हाँ, heterotrophic में saprotrophic भी, फंगस भी. वैसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अनुसार क्लासिफाई किया. रिप्रोडक्शन, asexual, sexual reproduction के अनुसार क्लासिफाई किया. Then phylogenetic relationship, that is the very important thing. Systematics में वही डिस्कस करता है ना, phylogeny, मतलब सेम डिसेंडेंट्स, एक एंसेस्टर से आया हुआ ऑर्गेनिज्म सब एक ही ग्रुप में आना चाहिए ना, अलग फाइलम में कैसा होगा. इसी तरह उन्होंने एंसेस्टर डिसेंडेंट रिलेशनशिप, एवोल्यूशन भी पढ़ा. तो ये 5 फीचर्स है द क्राइटेरिया ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. ये एमसीक्यू में आते हैं. And okay, so that's all for today. We'll discuss this chapter, continue this chapter in the next class. Thank you.